Okay, so today our focus is on graphs in ATP. But of course, graphs are just a part of the overall question. And this is a couple of things, a couple of pointers that you should know before we start. So, for example, how do you draw a graph? There are two kinds of graphs that the examiner asks you for. One is a graph in which they ask you for a smooth curve. So, in one of them, they ask you for a smooth curve. And the other one, they ask you for two intersecting lines. Okay. Now, to do these, to get a smooth curve or to do intersecting lines, you need points. तो points बनाने के हमारे पास कितने तरीके हैं? So plotting points, उसके हमारे पास दो तरीके हैं. So plotting के लिए, you can either use a cross or you can use a circle dot. Remember, circle dot. कभी भी ये नहीं करना कि dot को बड़ा कर दिया. That's wrong. That is not allowed. Okay, this is wrong. What you can do is you can have a dot and draw a circle around it, or you can do a cross. I would personally recommend a cross. There's a reason for it. There is a concept of anomalous point. I don't know how to spell it. Anomalous, I think A hota hai yahan pe. Anyways, so anomalous point, do check the spellings, please confirm kar lena. So anomalous points kya hote hain? These are the points that do not belong there in the trend. There are many reasons for it. One reason is कि आपका experiment ही ऐसा है. For example, you are measuring volume of a gas और आपने temperature को steady नहीं होने दिया. आपने heat की थी gas, वो expand कर गई, and then you did not wait long enough कि वो वापस room temperature पे आती. और आपने value note कर ली. तो अब आपके पास जो value आएगी, it will be more volume, it will be higher value than what the gas actually has at room temperature, right? क्योंकि at high temperature gases expand. So अब आपकी जो value आएगी वो आपके trend में नहीं आएगी. तो जब आप उसको points देखोगे तो हो सकता है आपके points ऐसे हों और एक point आपका इधर करके बन जाए. तो वो higher value होगी. तो that is wrong. That's an anomalous point. तो अब examiner क्या करेगा? Examiner will ask you to circle that point. So if you draw a cross, तो examiner को clear नजर आ जाता है कि अच्छा ये anomalous point उन्होंने consider किया. Similarly, there's another reason for anomalous points, human error. Yes, Amala, you're absolutely right. Human error is कि student ने measure करते हुए कोई beaker से value देखनी थी, उसने value गलत read कर ली. But examiner knows कि students human error लिख देते हैं और it's an easy mark. So अब for the last couple of years, examiner ने क्या करना शुरू किया? वो examiner says the student measured the value correctly, or examiner also can say human error. Beside human error, what was the reason for the value not being correct? So अब वो जानकर human error को they ask you not to consider it because they want you to think about what might go wrong with the experiment itself. Similarly, when you are collecting a gas underwater or when collecting over water happens, and let's say you have a hot reaction happening or usse aap gas collect kar rahe ho, then there's an idea called suck back. Suck back is when some gas or some liquid is pushed back into the tube it's coming from. That can be because of change in temperature or change in pressure. Because of change in temperature, उसकी reasons हमसे वो नहीं पूछता, but that's just an idea कि जब भी आप किसी liquid के अंदर gas को collect करते हो, तो suck back is a challenging problem which examiner has started to introduce recently. So आप उसकी वजह से भी आपके points anomalous आते हैं, आपकी readings खराब आती हैं. Similarly, sometimes we have what we call control variable. वो control variable अगर खराब हो जाए तो उसकी वजह से भी आपके anomalous points आ जाते हैं. So these are all reasons for getting the errors. Now, what do we have to write in the exam? If the examiner asks you to identify the anomalous point, you just identify, you don't give a reason for it. If the examiner says, suggest why this might have happened, only then you should give the reason. Otherwise, आपको explain करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Okay, so be very clear about this. So हमें plotting की समझ आ गई, हमें anomalous points की समझ आ गई. Next point is smooth curve और intersecting lines में क्या difference है? Smooth curve ये होती है कि आपने points बनाए. Let's suppose ये points हैं. Now, can you see that this point is anomalous?
So we will say that this point is anomalous. हम इसको circle कर लेंगे. अब हमने जब लाइन ड्रॉ करनी है, हमने इस पॉइंट को देखना भी नहीं है, हमने इसको completely will ignore it. And now when you're drawing the smooth curve, you have to make sure that you don't do this. This is wrong way. Why? Because I'm connecting one point to another. This is absolutely wrong. You need to draw a smooth line that passes through these points. When you're drawing a curve should go through all points except anomalous ones. So curve should go through all the points. You should connect all of those points. हाँ, आप anomalous point को ignore करेंगे. अच्छा, intersecting lines क्या होती है? Intersecting lines में क्या होता है कि let's suppose यही situation है, एग्जामिनर ने हमसे यही पूछा है कि इसी को ड्रॉ करो, but this time they have asked you to draw two intersecting lines. So again, you will ignore the anomalous point and now you will draw the line of best fit. Now, line of best fit क्या होती है? Line of best fit tells you two things. Of course, line of best fit does not include the anomalous point, but there are two main ideas that line of best fit should be able to tell. Number one, it shows the trend. What is happening overall? Is the value increasing? Is the value decreasing? Is the value constant? वो सारी बातें हमें line of best fit पहली बात है कि इसको वो show करना चाहिए. Second, number of points above the line is equal and equally far from line compared to number of points below. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये पॉइंट्स आते हैं और आपने इनको लाइन को ज्वाइन करना है, so one way of doing this might be that you draw a line like this, but you make sure that the line goes like this. Now, is this a line of best fit? Probably not. Why not? Because if you notice, this point and this point are roughly equally far away, but there are 2 points below the line and only one, sorry, 3 points below the line and only one above the line. So we should tweak it a little bit, probably make it something like this, I guess. Okay. Or it could also be something like this, I guess. And now it is more likely to be the line of best fit because there is 1 point above, 1 point below equally far, and 1 point below and 1 point above equally far. So this is again line of best fit. Manometers, you are not required to know about what they are or how to use them. There can be exam questions that talk about J-tube, but again, J-tube या manometer की working आपको नहीं आएगी, and you are also not required to remember any of that. In fact, वो physics का topic है, chemistry में हम उसको इतना ज़्यादा focus नहीं करते हैं. Okay, yeah. I'm sorry, Mala, what is not in the syllabus? Yeah, manometer is not. You're right. So we don't need to know about it. Okay, now coming back to the two intersecting line problem. So over here, there are two situations here. Do you see the trends? एक trend है in lines का. These are the lines which are, these are the points which are roughly the same value of y. They're not changing. We say that these are constant. And then we have these points. These are the lines. These are points that are rising in value. So we have two lines here. So एक line हमारे पास होगी horizontal. So it should go through these points. So ये ऐसे horizontal एक line होगी. इसको बहुत ज़्यादा extend करने की ज़रूरत नहीं है, but थोड़ा बहुत आपने extend ज़रूर करना है. This extending the line is called extrapolation. You must do it whenever they ask you for two intersecting lines. अच्छा, अब दूसरे क्या हो सकते हैं कि अब इनको मैं line of best fit इनकी बनाता हूँ. So this line of best fit might be like this, I guess. थोड़ा बहुत, not exactly there, but थोड़ा सा extend कर लेते. Yeah, there you go. So these are my line of best fit. मैंने इसको completely ignore किया है. This is not included in my points. So 1 point is above the line, 1 point below the line, and 2 points on the line. So this is a good line of best fit, I would say. And as you can see, this is the point where the reaction has completed. Even though हमारे पास यहाँ पे कोई point नहीं, but because the lines meet like this,
this is a point where the reaction is completed. And this is the minimum time or volume or whatever you need at the x-axis. वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी. Third question that students usually do not know how to answer is that should we connect origin? The simple answer is only if it happens by itself. Don't force it. कोई भी दबाव से आपने पॉइंट सेलेक्ट नहीं करने. अगर वो बनता है कनेक्ट कर दें, अगर नहीं बनता जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. Okay, so I think these are good ideas, good points to remember when it comes to graphs. Let's get down to it. Let's do the questions. So we'll start with this question. In the presence of catalyst, hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen. Okay. A student uses the apparatus below to investigate the rate of decomposition. This is important. Rate of decomposition वो check कर रहा है at two different temperatures. Temperature वो control करेगा. Temperature को वो change करेगा. So this is my independent variable. Okay. And this is my final dependent variable. लेकिन बात यह है कि रेट तो कैलकुलेटेड होता है, मेजर नहीं होता. सो इसका मतलब है रेट को वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं, मेजर नहीं कर सकता, वो कैलकुलेट करेगा. किसकी बेस पे? ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ गैस की बेस पे, और कितने टाइम में होता है उसकी बेस पे. अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे फॉर दिस सिचुएशन एंड विल फिगर इट आउट. अच्छा, अब वो कर क्या रहा है? लेट्स लुक एट दिस. अच्छा, नो वेट अ मिनट. बिकॉज वो टेम्परेचर टू डिफरेंट टेम्परेचर कर रहा है, तो एक एक्सपेरिमेंट में वो एक टेम्परेचर को फिक्स ही रख रहा है. तो इसका मतलब है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे. दिस इज अ कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर वन एक्सपेरिमेंट. तो एक एक्सपेरिमेंट में जो चीज चेंज ना हो उसको उस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं. इस पूरी स्टडी का वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ओवरऑल इस रिएक्शन का वो कंट्रोल वेरिएबल है. Experiment starts when the flask is tipped so that the catalyst comes into contact with the hydrogen peroxide. ठीक है, तो वो इसने फ्लास्क को किसी तरह वो टिप करेगा. One way of doing that is कि यहाँ से एक थ्रेड हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और जैसे वो थ्रेड को पुल करेगा ना, this will tip over and the catalyst will react with hydrogen peroxide. So it will release a lot of oxygen gas. That oxygen gas goes in here, and because there is water here, the gas will start to bubble out and it will collect over here. ठीक है. Why does the gas rise? Because it has lower density than this. Okay. Now, why are we measuring the gas? As you can see, the gas volume is being given out, and we are trying to measure using the measuring cylinder कि वो कितनी gas है. और वो हमें बताएगी क्या? It will tell us that at what temperature, what value of gas is collected in how much time. So the rate always depends on output per unit time. So here we might be like that, okay, this is the volume of gas collected per unit time. Thread के बारे में बात ये थी that how will he tip this beaker over? Usually we connect them using a thread, and then we pull on this thread, and when we do that, the beaker tips over, और वो catalyst hydrogen peroxide से react करता. Okay, let's do the question. The gas is collected in measuring cylinder. What property of oxygen gas allows it to be collected by this method? The property is that it doesn't dissolve in water, or it has low solubility in water. Because if it dissolved, then you wouldn't be able to collect it over here. It will just be fizzle out into the water. Now, a common answer to this is that, oh, because it is less dense. But you have to understand that it doesn't matter if it is less dense. If it is soluble, it will dissolve. वो less dense हो, वो more dense हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. The underlying reason is that oxygen and water, they have different kind of intermolecular forces. They don't mix together that easily. Oxygen में कोई charges नहीं होते, water में charges होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में interact करते हैं. So इसकी वजह से oxygen dissolve नहीं होती है. This reason that why does it not dissolve? No, not in your syllabus. But you should know that oxygen is only slightly soluble in water.
इसी वजह से तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती ज्यादा. सी वाटर में ऑक्सीजन ज्यादातर जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है. द प्लांट्स इन सी वाटर दैट डू फोटोसिंथेसिस. Name an alternative piece of apparatus that could be used to collect and measure the volume of gas. So a better choice where you don't have to take water is gas syringe. In fact, यहाँ पे the problem with the gas collected would be कि एक तो थोड़ी बहुत water में dissolve हो जाएगी, and secondly, some of it will also have water vapor, so it won't be pure. We'll have to dry it out. Does anybody remember dry कैसे करते हैं? Concentrated sulfuric acid. Okay, that is the best choice to do this. If you don't want to use that, then you can use calcium hydroxide solid, which is lime. ठीक है, और आप उसको भी use कर सकते हो. No, you're right, but a better choice is concentrated sulfuric acid. Give a test and observation to identify oxygen gas. Now, in our notes, which will be given to us in the exam, उसमें लिखा हुआ है oxygen relights a glowing splint. But उसमें टेस्ट और ऑब्जर्वेशन को सेपरेट नहीं उसने किया हुआ. सो द ऑब्जर्वेशन इज दैट इट रीलाइट्स एंड द टेस्ट इज दैट पास इट ओवर glowing splint. Now these notes will be given to you first time this year, but it does not mean कि आपको याद नहीं करना, because paper 2 and paper 1 में you are required to remember this. I don't know why Cambridge does it, because in real life you will have Google and you will have all these information available to you in case you ever need them. और जब आप experimentation करोगे तो वैसे ही आपको वो याद हो ही जाएंगे. You will internalize it. But उनकी पॉलिसी है कि वो आपको ये चीजें एग्जाम में प्रोवाइड सिर्फ पेपर 4 में करते हैं और बाकियों में नहीं करते. Okay, the result obtained for the first experiment are shown. Okay, we have these results as you can see. Do you notice कि यहाँ पे 40 का डिफरेंस है बट यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और फिर यहाँ पे सडनली 41 का डिफरेंस आ गया. तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि मतलब ये 10 का डिफरेंस और फिर 41 का डिफरेंस है. अजीब सी डिफरेंसेस हैं ये. बट उसके बाद फिर ये 6 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस और फिर कोई डिफरेंस नहीं है. Yes, Iman, in both IGCSE and O levels, paper 4 में या IGCSE के paper 6 में, in fact paper 5 में भी आपको notes given होंगे. अच्छा, I feel like that one of these values is anomalous, but let's draw it and then figure out. So हम इनको draw करते हैं. Okay, so 0 0. So I'll put a cross. Okay, 0 0. Then I have 240. So 2 per 40. So again, notice कि मेरा जो point है वो 4 छोटे points के अंदर बना है. So your point, whatever you draw, should be within the 4 small points. Okay. Okay, next one is 450. So 4 and 50. ठीक है. Now 50 मैंने अपने अंदाजे से लगाना है because ये इन दोनों के middle में होगा. 691, 91 भी मुझे अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा. Now if you're somebody who's confused about it, then I would suggest कि आप पूरी एक लाइन बना लो. ठीक है, और वो लाइन को देखो कि वो कहाँ पे आती है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना उसको आइडेंटिफाई करने में, जैसे मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने में, I'll simply connect it on this side, और यहाँ पे मैं 91 को देखूंगा कि अच्छा मोस्ट लाइकली 91 यहाँ पे होगा, और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा. सो अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया है कि माई पॉइंट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा या, सो दिस इज मोस्ट लाइकली माई पॉइंट. ठीक है. Next one is 897. 897. I think this will be this point. Then 1099, which is really close to this, and then 1200, 1200, and then 14 maybe 100. Okay. So this is my lines. Okay. Now they're saying that प्लॉट द रिजल्ट. प्लॉट हमने कर लिया, उसने हमें लाइन बनाने का नहीं कहा, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे. ओके. अब वो हमसे कह रहे हैं कि ड्रॉ सर्कल अराउंड द अनोमलस पॉइंट. डू यू सी द अनोमलस पॉइंट? इफ आई नोटिस तो ये ट्रेंड ऐसे इंक्रीज करता करता ऐसे कांस्टेंट हो गया. ये पॉइंट यहाँ पे बिलोंग नहीं करता. इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेंड.
सो आई विल सर्कल इट आउट। तो ये मेरा नॉर्मलस पॉइंट है। ये सर्कल आप बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 4 बॉक्सेस में रहने की जरूरत नहीं है। यूज द पॉइंट्स टू ड्रॉ कर्व। कर्व में मैंने आपसे बताया कि एनॉमलस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। सो आई गेस दिस इज माय कर्व गोइंग टू बी। नोटिस कि मैंने एक स्मूथ मोशन में सबको ज्वाइन किया है। आई मेड श्योर कि मैं बार बार इसको नहीं करूं। देयर विल ऑलवेज बी अ मार्जिन ऑफ एरर, यस, बट यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। ओके, ये नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट ऐसे करके ग्राफ बना दे, ठीक है? दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। You have to make sure that your line follows a trend and shows that. The student repeats the experiment at 50 degrees Celsius. All other variables are kept constant. पिछला वाला 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये 50 पे है। Higher temperature makes reaction time smaller. But does it affect volume? Remember that volume depends on moles. And when you increase temperature, you do not affect moles. इसका मतलब है उसकी फाइनल वैल्यू 100 ही रहेगी, बट दिस विल बी फास्टर। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा तेज रिएक्शन होगा, तो टाइम थोड़ा लगेगा इसको। यू कैन पिक एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस, बट इट विल इवेंचुअली गो डाउन, सॉरी, इट विल इवेंचुअली गो अप टू 100। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर भी कर सकते हो, लाइक आई गेस दिस वुड बी अ गुड आइडिया। ठीक है, सो ये हमारे पास एक मच फास्टर रिएक्शन बन गया। ओके, एंड व्हाई इज दैट? अब इसमें हम रीजनिंग क्या देंगे? वी विल टॉक अबाउट व्हाई दिस इज द केस। सो व्हाई इज दिस द केस? बिकॉज पार्टिकल्स हैव हाई ग्रेटर रेट। ठीक है, अब इसमें हमने सारी बातें जो बतानी है वो क्या क्या है। एक ये हमने बताना है कि वो स्टार्ट कहां से हुआ, वो कहां पर खत्म हुआ, वो क्यों कम टाइम पे हुआ। ठीक है, सो विल से दैट आई थिंक इसमें हम ये एक्सप्लेनेशन यही देंगे दैट द रेट इज हायर at higher temperature because particles have high kinetic energy but volume produced is same। और इसकी रीजन आप दे सकते हो because moles are same। this part you can avoid it, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में ग्राफ सही बना देते हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन कि वो तेज क्यों है वो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, a student makes an aqueous solution of potassium nitrate. It's a snap salt. This is an unusual question. अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। She reacts dilute nitric acid with aqueous solution of salt. Salt. This is interesting because usually when we are making snap salts, we use titration. Amala volume does vary with concentration because concentration affects moles, N equal to Cv. So concentration affects moles, which is why moles change, and because of that volume changes. With an aqueous solution of salt, salt के साथ हम usually snap salts को use नहीं करते। snap क्या है? snap is sodium, nitrate, ammonium and potassium. So इन salts को बनाते हुए we prefer titration, but notice कि उसने अभी acid को alkali से react नहीं किया, उसने उसको salt से react किया। So that means उसने पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है और उसको कोई सॉल्ट चाहिए, तो देखें नाइट्रेट तो मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड से। सो पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट बता दें विच कैन रिएक्ट विद एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, क्योंकि वो एल्कली है, बट पोटेशियम कार्बोनेट, यस। सो शी कुड यूज पोटेशियम कार्बोनेट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट दे हैव आस्क्ड यू टू नेम इट, तो आपने फॉर्मूला नहीं लिखना। अच्छा, अगर आप कोई और सॉल्ट लिखते हो, ठीक है, लाइक पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड, होंगे वो भी सॉल्युबल, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है। व्हेन दे रिएक्ट they will produce both potassium nitrate and some other salt as well.
मतलब आप सोच लेना, लेट्स सपोज मैं KCl यूज करता हूँ, KCl प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स मी HCl प्लस KNO3। ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। जब चारों सॉल्युबल होते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भी वही करेंगे जो ये दोनों कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो रिएक्शन जैसे रिवर्सिबल होगा, आपके लिए सॉल्ट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो रिएक्शन रिवर्सिबल कब नहीं होता? जब एक साइड पे कोई चीज इनसॉल्युबल हो या कोई चीज गैसेस फॉर्म में हो, ताकि वो रिएक्शन में रहे ही ना, वो उड़ जाए। जैसे यहां पे जब मैं इसको देखूंगा पोटेशियम कार्बोनेट से, जब इसको रिएक्शन करवाऊंगा, तो अब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करेगा। एज यू नो, एसिड्स डिस्ट्रॉय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, वाटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। नाउ द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इट इज नॉट रिवर्सिबल बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। दिस वॉज रिजॉल्व बाय कोका कोला एंड अदर कंपनीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर तो कार्बोनेट बनाती है, बट वहां पे शुगर भी है और भी उन्होंने चीजें डाली हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एस्केप भी करती है, स्पेशली व्हेन यू हीट इट अप एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल। तो उसका तरीका क्या है? इफ यू वांट द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी देयर, जब तक कस्टमर उसको कोक के कैन को खोल नहीं लेता, यू प्रेशराइज इट, यू डोंट लेट कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप। ठीक है? So yes, these are soluble and these are also soluble, but because carbon dioxide is gone, the reaction is not reversible anymore. Okay? So it's a very different way, but a very valid way of making salt. Okay. The student investigates the mass of potassium nitrate that dissolves, okay, at 100 cm cube of water. This is its solubility. अब जरा गौर कीजिएगा. The mass that dissolves, this is your डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? सो इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस 100 cm क्यूब में वो उसको चेक कर रहा है, दिस इज योर कंट्रोल वेरिएबल। ओके? एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप खुद रखेंगे 25, 30, whatever. सो दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, तीनों चीजें जरूरी है आपको पता होना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। अच्छा, कई दफा डिपेंडेंट वेरिएबल खुद नहीं आता, उसकी कोई कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो हम मेजर वॉल्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उससे कैलकुलेट करके रेट निकाल लेते हैं, तो रेट इज स्टिल योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके? नाउ व्हाट्स द डिफरेंस इन दीज, और व्हाई डू वी हैव दीज वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट यू कंट्रोल, द वन हु डज द एक्सपेरिमेंट। मेरे हाथ में कि मैं कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाऊं, मैं 50 पे करूं, मैं 100 पे करूं। मेरे हाथ में कि मैं कब रिएक्शन स्टार्ट करूं, टाइम। यूजुअली टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिएक्शंस वेयर टाइम इज इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में टाइम की जरूरत नहीं है हमें, बट रेट वगैरह के रिएक्शन टाइम इज इंपॉर्टेंट। सो टाइम मेरे हाथ में कि मैं रिएक्शन कब स्टार्ट करूं, दैट इज टाइम, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं चेक कर रहा हूं कि एक एसिड कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्ट करता है, the concentration is in my control. I will decide whether I'm doing it at 0.5 or 1 or 2.7. So again, that is independent variable, and that will be on the x-axis. Dependent variable is the one that comes as a result that the reaction happens and then you measure it. Reaction के बाद आप उसको measure करते हो और उसको आप study कर रहे हो. That is your dependent variable. तो यहाँ पे वो solubility को study कर रहा है, तो वो mass dissolved per 100 cm cube उसको मेजर कर रहा है। अच्छा, और थर्ड इज 100 cm cube ऑफ वाटर। तो 100 cm cube इज कंट्रोल वेरिएबल। क्यों? लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं एक सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी 2 ग्राम है, दूसरे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 7 ग्राम्स। देन ऑब्वियसली टू मेक अ फेयर स्टेटमेंट, टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, आई नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन आई एम टेस्टिंग दीज, मैं दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करूं। ठीक है? अगर आप कभी भूल जाएं तो रिमेंबर द ग्रेट लीडर बिलावल भुट्टो सेड, ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा। ठीक है? सो यहां पर अगर आप वाटर ऐड कर देंगे, 100 नहीं रखेंगे, लेट्स सपोज आप कहते हो जी एक की 7 ग्राम्स इन 500 cm क्यूब है और दूसरे की 2 ग्राम्स इन 100 cm क्यूब है, तो मुझे कंपैरिजन तो नहीं कर सकता मैं।
I need to make sure that the comparison is same in both of them so that I can make a scientifically accurate statement. So control variable का काम ये होता है कि वो आपको कंपैरिजन करना आसान कराता है. In many reactions, रेट ऑफ रिएक्शन को खासतौर पे देखते हुए, लेट्स सपोज मैंने देखना है कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करते हैं, तो फिर मैं बाकी सब फैक्टर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, हर चीज को कांस्टेंट करूंगा ताकि मुझे सिर्फ टेम्परेचर का इंपैक्ट नजर आए और बाकियों का इंपैक्ट नजर ना आए या उससे कोई इंपैक्ट ना बने. सो those constant variables, the things that can affect the reaction but you try to make them the same for fair comparison, उनको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं. इस क्वेश्चन में 100 cm क्यूब ऑफ वाटर इज कंट्रोल वेरिएबल बिकॉज ये चीज चेंज नहीं कर रहे, हम हर सॉल्ट में, हर एक्सपेरिमेंट में उसको फिक्स कर रहे हैं. ओके, ऑन द ग्राफ एक्सटेंड द ग्राफ टू 0 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, ये अब आपके सामने ग्राफ है. 0 पे उसने कहा इसको ज्वाइन करो, लेकिन देखें उसने सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, यानी कि एक्स एक्सिस की 0 वैल्यू, उसने वाई की 0 वैल्यू नहीं कहा है. सो इट डज नॉट मीन कि आप जबरदस्ती इसको ऐसे 0 पे लेके आए. दैट इज नॉट वैलिड. You need to follow the trend. So as you can see, the trend goes something like this. So I don't think it was 0 पे join कर रहा है. So I will also follow the trend and maybe join it here. So this is my point. Make sure you don't forcibly make it go through 0. Okay. Use the graph, reduce the temperature at which solubility is 180 grams. So 180 grams is this is 160, 170, 180. So again, how do you do these? And even though it's a 1 mark question, I personally recommend you always show your working. So अब straight line बनाएं और इस straight line को ऐसे नीचे join करें. So I'm getting a value of 90 कुछ होगा ये exactly, sorry 80 something, I think 85 है. ठीक है, so that's my value. The mass of potassium nitrate dissolved in 100 cm cube of water at 90 degree Celsius. तो अब मुझे 90 degree Celsius पे देखना है. So this is 90. So 90 पे मैं ऐसे straight line बनाऊंगा और इसको ऐसे join करूंगा. तो ये 1, this is 190. So 197 I guess. मतलब again, this is just a value I'm getting. 197, 195 कुछ भी हो सकती है. There will be a margin of error that the examiner will give you. Next वो कह रहे the mass of potassium nitrate that crystallizes. Crystallize का क्या मतलब होता है? Crystallizes means that when you cool any solution, whenever you cool any solution, तो उसमें से जो solid पहले dissolve था अब dissolve नहीं है, वो crystal होता है. So जब let's suppose ये 90 डिग्री पे था और यहां से मैं कूल करके इसे 40 पे ले आता हूं, तो 90 पे वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया जी 197 है, लेकिन 40 पे वैल्यू आती है 65. So 197 is the grams dissolved in 100 cm cube at 90 degree Celsius. And 65 is the grams in 100 cm cube dissolved at 40 degree Celsius. So जो 65 होगा वो तो अभी डिसॉल्व है, लेकिन जितना इनका डिफरेंस होगा दैट इज नो लॉन्गर सॉल्युबल, दैट हैज क्रिस्टलाइज्ड. सो अब वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द mass crystallizes when it's cooled from 90 to 20. So now you have to draw a graph at 20. So 20 पर मैं इसकी वैल्यू को नोट करता हूं. Again I will show the working and I draw a straight line. I think this must be ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है. So I'm assuming 32 है. So 197 minus 32. So that is my value, which is what? 165 grams. And that is the answer that I get. Of course, you will have to show this on the graph for the examiner to give you the mark. इन points को देखे बगैर examiner mark नहीं देगा. ठीक है, बट यू जस्ट सब्ट्रैक्ट देम कि अच्छा अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस पे 90 पे था 197, 20 पे 65 या व्हाटएवर इट इज, ये अभी भी डिसॉल्व है, लेकिन ये जो बीच वाला सारा है इट हैज क्रिस्टलाइज्ड, सो दिस इज नो लॉन्गर डिसॉल्व्ड.
Okay, so this is crystallizing. Ammonia is produced by the reaction between nitrogen and hydrogen in the presence of catalyst. Nitrogen mixed with hydrogen and sample of reaction mixtures and removed every 5 minutes. So basically वो एक सिलेंडर में रिएक्शन कर रहा है और आफ्टर अ वाइल उसमें से कुछ थोड़ी सी सैंपल निकाल लेता है एवरी 5 मिनट्स और फिर उसमें परसेंटेज ऑफ अमोनिया फिगर आउट करता है. अब यहाँ पे एज यू कैन सी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द टाइम, द डिपेंडेंट वेरिएबल is the percentage of ammonia, and the control variable is everything that will affect the rate of reaction. So that can be temperature, that can be pressure, because these are gases, that can be concentration, yeah, amount of nitrogen, hydrogen added. All of that is part of the control variable. Plot the results on the graph and draw a smooth curve of best fit. So ये बहुत आसान सा है. I think everybody can draw it. So 0, 0, 5, 10. So 5, 10, 10, 18. I'm assuming this is the point. 15, 15. अब ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है. Because this seems like an anomalous point, but let's draw it. 20, 24. I'm assuming this is the point. अच्छा ये point थोड़ा सा नीचे आएगा. 25, 25. 30, 25. That shows कि reaction complete हो गया होगा. अब उसने हमसे कहा है draw a line of curve of best fit. Yeah, this is correct. Okay. ठीक है. Draw a smooth curve of best fit. तो हम इनको draw करते हैं. There you go. And this is my anomalous point. There's a point of anomalous, yes, उसको मैंने ignore किया है. Use a graph to deduce the correct percentage corresponding to point circle in this. Correct percentage का मतलब है कि अच्छा ठीक है ये anomalous है मान लिया, लेकिन अगर ये ठीक किया होता तो क्या point आता? तो you just extend the line like this और अपने graph पे देखें कि ये कहाँ पर match कर रही है. So I'm getting 22%. तो मैं लिखता 22%. Okay. If the examiner asks you to draw one line of best fit, तो आप सीधी सीधी line of best fit बनाएंगे. If the examiner asks you for a curve, आप curve बनाएंगे. If the examiner asks you for two lines, तो two lines के केस में हम ऐसे एक straight line बनाते हैं, ऐसे, और एक line of best fit यहाँ पे करके कहीं पे बनाते हैं, probably. ठीक है, ऐसे करके कोई बनती. Weird सी होती. इस data points में line of best fit बनाना बड़ा मुश्किल है, but probably इस तरह की कुछ होती. So it depends on what the data is. In this particular data, it's very hard to draw a line of best fit. The student decides to repeat the whole experiment. Repeat करने से क्या advantages होते हैं? Repeat करने से फायदा ये होता है कि आप average ले सकते हो. ठीक है, और जब आप average लेते हो तो आपके पास values correct आती. So this is a good idea because you can now take the average, and because you can take the average, that means you can easily confirm कि अच्छा आपकी value सही है कि नहीं है, correct कर सकते हैं उसको. Why catalyst is used to speed up the reaction, obviously. The reaction between nitrogen and ammonia is reversible and reaches dynamic equilibrium. Use the graph to suggest a time when that happens. So when does equilibrium establish? Remember, equilibrium के बारे में हमने दो बातें पढ़ी थी. One is that at the equilibrium, rate of forward and backward reaction is the same. And second, we know that the concentration of each reactant or product stops changing. वो इक्वल नहीं होती, वो बस चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाती. सो दैट मींस यहाँ पे हमने बस देखना है कि परसेंटेज कब कांस्टेंट हुई है, कब वो हॉरिजॉन्टल हुई है. तो आई थिंक इट इज दिस पॉइंट. सो अगेन टू शो टू द एग्जामिनर कि मैंने कैलकुलेट कैसे किया है उसको, आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. This straight line for the examiner to see कि मैंने कैसे. There's something wrong happening. So this straight line, probably 24. So 24 मैं लिख दूंगा. यूनिट गलत मत लिखिएगा, अगर आपको यूनिट नहीं समझ आ रहा ना लिखिए. Although यहाँ पे
यूनिट उसने दिया हुआ है, मिनट्स, so 24 minutes. Can you write increased reliability? I'm assuming आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो. Increased reliability is a little vague. How is the reaction more reliable just because you repeated it? You might want to offer a little bit of explanation on that. I'm not saying it's wrong. I'm just saying that it's incomplete. The reason repeating the experiment gives us better results, yeah, more reliable results, is because now you have values which will not be anomalous, क्योंकि आप दूसरी दफा जब चेक करोगे तो गौर से चेक करोगे. And secondly, you can take the average of both values to get a more accurate value. I don't understand what you mean by B. Okay, let's do this question, number 4. A student attempts to determine the percentage of oxygen in the air using the apparatus shown. ये कर क्या रहा है कि वो यहाँ से उसने obviously oxygen हवा में ली है, वो इसको push करता है इधर को, the gas goes over it, copper will react with oxygen to make copper oxide, और बाकी गैस इधर आ जाती है. फिर वो इधर से दोबारा पुश करता है और फिर वो उसके ऊपर से गुजरती है और फिर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है. इवेंचुअली ऑल द ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद कॉपर प्रोवाइडेड दैट कॉपर इज इन एक्सेस. अगर कॉपर लिमिटिंग हुआ ना तो फिर फायदा कोई नहीं स्टडी का. वी नीड टू मेक श्योर सारी ऑक्सीजन रिएक्ट करे. इसका मतलब है कि कॉपर शुड बी इन एक्सेस. At the start of the experiment, there is 90 cm cube of air in the apparatus. Okay. The air is passed backwards and forward. ठीक है. This is repeated until the volume stops decreasing. The gas is allowed to cool to room temperature. ये क्यों कर रहा है वो? At the start 90 cm cube था. तो end पे भी जब आपने वॉल्यूम में ये करनी है तो आपने फिक्स वैल्यू पे करनी है. And this is a source of error if you don't do it. Because gases expand. ये मैंने बिल्कुल लेसन के स्टार्ट में आपको बताया था. Okay, let's answer the question. Why is an excess of copper used? So that all oxygen is reacted. Why is the gas allowed to cool to room temperature before measuring? So इसमें हम बताएंगे कि gases expand when heated. So both measurements should be at same temperature. Okay. The student repeats the experiment several times using different initial volume and excess of copper used in each experiment. ठीक है, उसने किया है और उसके पास वैल्यूज आ गई हैं. अब हमें इनको ड्रॉ करना है. All right, let's draw it. Let me open it on phone. So I have the points. हमारे पास initial volume is obviously it's in my control. Final volume is the dependent variable. तो इसको ग्राफ करते हैं. 90 पे 71 है, ये 90 है. These graphs are hard to see honestly. तो मैं यहाँ से lines बना रहा हूँ. ये 70 है तो I'm assuming 71 ये होगा. So ये मेरे पास 71 है. Okay. Next. 70 पे 55 है. This is 70. And this is 50. So 55 ये है. ठीक है. ये करके 55 है, ये 70 है, तो यहाँ पे करके मेरा पॉइंट होगा. ठीक है. 60 and 52. 60 is pretty straightforward. And 52, I think 52 will be this, if I'm not wrong. So this is 52. 50 and 39. 50 is here. So straight line, and 39 is probably here. So this is my point. It's a time-consuming process. 40 and 31.
40 is this point. 31, I am assuming, will be this. So this is my point. And 2016, 20 पे 16. I'm assuming this will be my point. ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें इसको ड्रॉ करना है. Extend the upper end, draw a line of best fit. Okay, line of best fit के लिए मुझे एक straight line बनानी है which passes through most of these points. Okay. अब क्या मेरे पास कोई anomalous point है? What do you think? कोई anomalous point है यहाँ पे? मतलब ये ऐसे straight जा रही हैं और ये वाला point नहीं आ रहा बीच में. So I will circle this out. This is my anomalous point. I will ignore this. And now my line will be pretty straightforward. I have the advantage of using a computer, but exam में जब आप इसको कर रहे होगे तो you have to use a scale. Make sure that your scale is see-through. Steel वाले scale use नहीं करने. Don't use those scales जिनके ऊपर ऐसे करके उन्होंने designing करके blue lines लगाई होती हैं. They are the worst, honestly. कोई फायदा नहीं होता उनका. Make sure that you use one that is clear. ठीक है? So ये मेरे पास एक straight line आ गई है. उसने कहा है कि extend the point upper edge की तरफ. तो ये मैंने extend कर दिया उसको. Okay. The anomalous result is not due to an error by the student in reading the volume. वो कह रहे हैं कि उसने वैल्यू ठीक मेजर किया. तो फिर एरर कहां से आया? तो भाई 2-3 एरर्स हो सकते हैं. वैल्यू ठीक रीड की है, हो सकता है जल्दी रीड कर लियो. ऑक्सीजन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं दिया हो पूरा. ये भी हो सकता है कि उसको कूल डाउन होने का भी पूरा टाइम ना दिया हो. Both of those are important because you have to make sure that all the oxygen has reacted and it is cooled down to room temperature for a fair comparison. So both of those reasons are fine. You can give any of those two reasons. I don't understand what you mean by you need big scales or small scales. I don't understand that. Use your graph to determine the final volume if the student uses 100 cm cube as the initial volume. So अगर वो 100 use करता है, so 100 again is over here. So I'll draw a straight line here, 100 पे, and I'll draw a horizontal line here to see कि उसकी value क्या है. So that value is 77, I think. So it will be 77. Okay. Is there a range in the exam for this kind of question? There is always a range of error that you can make. So, for example, one student might be getting, I also suspect मेरी value गलत होगी है. I think this is a straight line. So yeah, this might be 79, the actual answer. But it is possible that some student might get 78 or some student might get 80. Both are acceptable. Depends on the graph. In chemistry, there's not a lot of range because the points that you're given, they are very close together and they're very limited in number. So there's not a lot of variation that is acceptable, but a slight change might be fine. For example, in this question, I don't expect a lot of range because it's a simple straight line. But if a question was draw a curve, or if a question was draw two curves, then there will be a greater room for error. So this is 79. Using your answer, calculate the percentage of oxygen in air. So if 79 is the volume of gas after reaction, so what's the percentage that reacted? 100 minus 79. So that's 21. And there you go. That's actually the correct value. And this is actually an interesting question. I want to do it. So we might go a little over 8 o'clock. I hope that's fine with everybody. The reaction between lead nitrate and aqueous potassium iodide produces a precipitate of lead iodide. Again, why is this reaction not reversible? Because this is solid being made. So उसकी वजह से वापस नहीं जा रहा है. A student has two solutions. G is potassium iodide. So I'll just write G here ताकि बाद में मुझे आसानी रहे. And this is H. Okay. The student determines the concentration of G by adding different volume of H. Okay, so he has concentration of G, which is what he's trying to figure out. So this is going to be dependent variable.
by different volume of H, that is going to be my independent variable, to 4 cm cube of G. So this one, 4 cm cube of G, that's going to be my control variable. Okay, so there you go. The diagram shows the result. Okay, all right. So he's getting more and more precipitate, but then the precipitate's height remains constant. That shows that all the reactant has been used up here. So any other reaction is just useless, to be honest, because now he's just adding extra amount. They're not really producing any result because precipitate's amount doesn't change. The student uses a burette to measure volume of GNH. Good choice. Burette and pipette are always the good choice to measure volume. Why does the student do that? The student does that because burette has a lesser error. Burette has more accuracy. So both of them are acceptable. Okay, so burette is more precise or more accurate or has less error than measuring cylinder. Because it's a comparison question, I would suggest you talk about the comparison. You talk about both of them. Why did the student stop at 12 and not carry out further measurement? He didn't because height has already become constant. And that's what he was trying to figure out. He measures and records the height, right? So that is what we have as, in this particular case, the dependent variable, and volume is the independent variable, because this is a calculated dependent variable and this is the correct direct dependent variable. So you see the difference? Just like in rate, we said volume was the dependent variable and rate was calculated dependent variable. So just like this. So the dependent variable has become constant. The height has become constant. Height has become constant, which means any other amount that he's adding is just in excess. Plot the results and draw two intersecting straight lines. So I'm gonna just randomly draw them out. So let's say yeah. So you will get 3 points that are just straight lines. So you make sure that you extend them a little bit. And you will get these points which are on a line of best fit. So I'm assuming this to be my line of best fit. There you go. This is probably my line of best fit. And here you can see that this is the amount where the reaction actually became in excess, or the reaction completed, which means to get this height, you just need what? 6.4 cm cube of H. Any more than 6.4 is not affecting the output that we get. So it's all in excess. The height of precipitate, if 3.5 was added. So at 3.5, probably over here, I will draw a straight line. I will go like this and I'll figure out what the height is from the graph. The volume that should be added to produce a precipitate, which was 20 millimeters in height. So I'll connect it to 20, connect it downwards and see what the volume is. The minimum volume of H that reacts completely. So according to my graph, which is again just randomly made up, I get a value of 6.4. So I'm just going to go with that for now. And this is an interesting part that I want you to know. H is 1 mole per dm cube lead nitrate. Lead nitrate. This is H, this is G. And we just figured out the volume of G was 4 cm cube. The volume of H was 6.4 cm cube. Use your answer. Calculate the concentration of potassium iodide in G. Okay, so I have volume here. I have volume here. I also have concentration here, which is 1. So what's missing? Number of moles. So number of moles is concentration times volume. So 0.0064. That's how many moles of H I have. I'll use the mole ratio 1:2. So 0.00642x. So that gives me 0.0128 moles of G. And because I know the volume,
I can easily figure out the concentration. Again, N equal to CV. Even though formula is not required, I always write the formula because later on I can come back to it and see what I did. And don't forget to divide the volume by 1000 to convert it to dm cube. And there you go. I'll just solve it and I will get my answer. So see how they connected simple graph value to the mole question, and that always happens. So this worksheet, it's around 40 pages long. Again, you don't have to do all the questions, just enough to understand it. Okay. So good luck.